Hello friends, so welcome to the ncert series textbook class 8, that is resource and development. Let's start the chapter 3, that is about agriculture. So Gurpreet, Madho and Tina are walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the market, in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuits from flour. This transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. Secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread and weaving of cloth are examples of this activity. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services. Transport, trade, banking, insurance and advertising are examples of tertiary activities. Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agricultural activity. Two-thirds of India's population is still dependent on agriculture. Favorable topography of soil and climate are vital for agricultural activity. The land on which the crops are grown is known as arable land. In the map, you can see that agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. ये मैप दिया हुआ है, किसकी मैप है? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड का ये मैप दिया हुआ है. देख सकते हो कि कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है इन द होल वर्ल्ड. अब देखो, डू यू नो कि ये जो है एग्री, शेरी, पीसी, भीटी, हॉटी, तो इतने प्रकार की कल्चर होती है और इनका जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है तो काफ़ी अच्छी बात है. इसका ज़रूर याद रखना आपने कि एग्रीकल्चर क्या है ना, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग. एंड सेरिकल्चर, कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स. तो सेरिकल्चर किसके साथ रिलेटेड है? सिल्क के साथ रिलेटेड है. इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर. एंड पीसी कल्चर जो है ब्रीडिंग ऑफ फिश. तो पीसी कल्चर किसके साथ रिलेटेड है? फिश के साथ रिलेटेड है, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स. ठीक है. एंड विटिकल्चर जो है ये ग्रेप्स के साथ रिलेटेड है. कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स को हम विटिकल्चर कहते हैं. और हॉर्टिकल्चर होते वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ये तीनों को ही हम एक साथ कहते हैं कि फॉर कमर्शियल यूज डेफिनेटली वी कॉल्ड इट हॉर्टिकल्चर. ओके. सो व्हेन वी यूज वेजिटेबल्स, fruits and flowers for commercial use, we call that horticulture. Viticulture is for grapes, pisciculture for fish, sericulture for silk, agriculture for everything, tilling the land. Now, farm system. Agriculture or farming can be looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor definitely. तो इस छवि पर देख सकते हो कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेस क्या है. आउटपुट तो सिर्फ क्रॉप ही होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर में. और फिजिकल इनपुट ये सारे है, ह्यूमन इनपुट ये सारे है और ये भी है. तो ये हो गया आपके फार्म के सिस्टम है. सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर प्लाउइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग. दी अब जो विलेज में रहता है उसको ये सब बताने की क्या ज़रूरत है, तो आपको ही पता ही होंगे, आई होप. देन टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है ना. फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड. Depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology, farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming, right? So farmings are basically two types, that is subsistence farming and commercial farming. So subsistence farming क्या है ना, it is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming.
In intensive subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. Then primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding. Okay, do you know shifting cultivation is known by different names in different parts of the world. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है, मिल्पा जो है मेक्सिको के है, रोका हो ब्राज़ील का, लादांग है मालয়েशिया का. ठीक है, मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन का हम डिफरेंट नेम से जानते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. झूमिंग इसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कहते हैं, मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहता है, मालয়েशिया में लादांग कहता है. अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. तो ये टर्म यूज, ये जो फ्रेज है इसको आपको याद रखना है कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन का और एक नाम है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. देन नोमैडिक हार्डिंग क्या है? नोमैडिक हार्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. Next হচ্ছে commercial farming. So in commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. In commercial grain farming, crops are grown for commercial purposes. Wheat and maize are commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season and only a single crop can be grown. In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeastern Brazil, New Zealand and South Africa. तो मिक्स्ड क्रॉप क्या है कि एक साथ है जो लैंड है वहाँ पर जो है ग्रोइंग फूड भी ग्रो किया जाता है और फॉडर क्रॉप्स भी ग्रो किया जाता है एंड लाइफ स्टॉक भी रेज किया जाता है उस फार्म एरियाज़ में या लैंड में. ठीक है, तो उससे हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं. अब जो ये कहाँ देखा जाता है ना, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में. अब प्लांटेशंस आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, sugar cane, cashew, rubber, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of a transport network is essential for such farming. Then major plantations are found in the tropical regions of the world. रबर इन मालয়েशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील. तो ये मैच मेकिंग में आप कहा सकते हैं सीटेट में कि रबर के लिए कहाँ फेमस है ना, मालয়েशिया फेमस है. कॉफ़ी के लिए होगा आपका ब्राज़ील, टी के लिए होगा कि इंडिया एंड श्रीलंका के लिए, श्रीलंका भी टी के ही लिए है. ठीक है, तो इंडिया एंड श्रीलंका, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका, ये प्लांटेशन क्रॉप है. ओके, रबर इन मालয়েशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका. अब मेजर क्रॉप्स क्या है ना, लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. अब राइस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, व्हीट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मतलब क्रॉप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको जानना पड़ेगा इस चैप्टर में.
तो राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेई सॉइल which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic conditions, as in West Bengal and Bangladesh, 2 of 3 crops are grown in a year. 2 to 3 crops are grown in a year. अब wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. It thrives best in well drained loamy soil. ओके, तो wheat के लिए क्या चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए. और हमने राइस के लिए देखा कि क्या कैसा सॉइल चाहिए ना, एलुवियल क्लेई सॉइल चाहिए. तो ये बात आपको ध्यान में रखना है. एलुवियल क्लेई सॉइल में राइस अच्छी होती है और ड्रेन्ड लोमी सॉइल में आपका व्हीट अच्छा होता है. व्हीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, जहाँ का टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट है. यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, क्योंकि टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए व्हीट कल्टिवेशन के लिए. अब मिलेट्स, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स. इट इज ए हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया. तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर दी एग्जाम्पल ऑफ मिलेट्स इन इंडिया. अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर. डू यू नो मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न. वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो हम जो पॉपकॉर्न बोलते हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, ये मेज ही है. मेज है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये मेज है. और मेज क्या है ना, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स. मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको. तो कॉर्न भी बोलते हैं जिसे, वही है, उसका नाम ही है मेज. अब कॉटन. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 frost free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soils. China, US, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. Okay, interesting fact, who discovered the coffee plant? There are different versions about the discovery of coffee. In about AD 850, Kaldi, an Arab goat herder who was puzzled by the queer antics of his flock, tasted the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. तो ये बात जानने के लिए है. एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यूज उतने इंपॉर्टेंट है नहीं. हम जूट के बारे में देखेंगे. जूट और ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर. तो गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, जूट को बोलते हैं. इट ग्रोज ऑयल ऑन एलुवियल सॉइल. जूट कहाँ पाई जाती है, सबसे अच्छा कहाँ होती है, एलुवियल सॉइल में होती है. एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज. इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. डेफिनेटली इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट. Then coffee. Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. Hill slopes are more suitable for growth of this coffee. Okay, कॉफ़ी के लिए कहाँ सबसे अच्छा होती है ना, हिल स्लॉप में होती है. अब ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया. तो कॉफ़ी प्रोडक्शन में ब्राज़ील फास्ट है, देन कोलंबिया, देन इंडिया. Then tea. Tea is a beverage crop grown in on plantations. This requires cool climate and well-distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. It needs well-drained loamy soil and gentle slopes. And labor in large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट refers to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways, such as increasing the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds. Mechanization of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. Agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large populations usually
practice intensive agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. Larger holdings are more suitable for commercial agriculture as in USA, Canada and Australia. With the help of two case studies of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and developed country. Do you know food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life? तो ये तो काफ़ी इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि ऑफिशियली आपका हो सकता है फूड सिक्योरिटी हो, बट पता नहीं यार कितना लोग आज भी बिना कुछ खाए ही सो जाते हैं. देन अ फार्म इन इंडिया. देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज. तो केस स्टडी की बात कर रहे हैं. विच फार्मलैंड ऑफ 1.5 हेक्टेयर्स. हिज हाउस इज इन द मेन विलेज. He purchases high yielding varieties of seeds from the market every alternate year. The land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice or pulses. The farmer takes advice of his friends and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices. He takes the tractor on rain for plowing his field. Though some of his friends still use traditional method of using bullocks for plowing, there is a tubewell in the nearby field which he takes on rain to irrigate his field. Munna Lal also has 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town, Amul. He is a member of the cooperative society which also advises him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination. All the members of the family help him in various farm activities. ये जो artificial insemination है ये animal cruelty के अंदर आती है, जो वेजिटेरियन यानी जो जैसे कि एक फेसबुक में यूट्यूबर का देखा था, क्या नाम था उसका भूल गया, अरविंद नाम के है, तो एनिमल क्रूएल्टी के अंदर आती है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज. समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HIV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स. ये एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के एक रीज़न भी यही है कि HIV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, क्योंकि इसको जो है इसका फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगता है, वाटर ज़्यादा लगता है और इसके लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ते हैं, मतलब वाटर पंप करना पड़ता है, ग्राउंड वाटर पंप करके हम एग्रीकल्चर करते हैं. उससे सारी चीज़ें हम और ये HIV सीड्स होती है ये इंसेक्ट्स से द्वारा वल्नरेबल भी होती है, तो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं. ऐसे करके सारी चीज़ें मतलब गया काम से. ही सेल्स इज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन. सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. A farm in the USA. So the average size of a farm in the USA is much larger than that of an Indian farm. A typical farm size in the US is about 250 hectares. The farmer generally resides in the farm. ऐसा एक फार्म होना चाहिए बस, ठीक है, लाइफ में. तो आप बस और भी काम करो, बट एक फार्म ओन करो जहाँ पर आप ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें ग्रो करोगे, ठीक है, तो आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगा, ये बात है. और ये फार्म USA की तरह होना चाहिए, ठीक है. अब दी फार्मर तो आप देख लेते हैं कैसे कैसे होती है. तो दी फार्मर जनरली रिसर्च इन दी फार्म. सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट. जो होरन a farmer in the Midwest USA in Iowa state owns about 300 hectares of land. He grows corn in his field after making sure that soil and water resources meet the needs of his crop. Adequate measures are taken to control pests and that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. The results help Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite, which gives him a precise picture of his field. Okay, this helps him to use chemical fertilizers and pesticides wherever they are required. तो बेसिकली यहाँ पर यही डिपिक्ट किया जा रहा है कि इंडियन फार्म और USA फार्म में से क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो USA में है टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है वहाँ पर एक फार्म ओनर के पास. ही यूजेज ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है, मशीन्स के द्वारा होती है. कॉम्बाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस. ये ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच्ड टू मार्केट एजेंसीज. द फार्मर इन USA वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर. एंड इसलिए वहाँ का फार्मर भी बहुत रिच है, ठीक है. तो ये
जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेस मैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। इंडिया में क्या है, सब पीजेंट फार्मर है, सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए हम चाषबास करते हैं, बट यूएसए में एक बिजनेस है, टोटल बिजनेस। तो यही बात है, यही डिफरेंस है यूएसए और इंडिया की फार्मिंग सिस्टम में। तो इस वीडियो को हम यहीं पॉज करेंगे, और एक चैप्टर हमको रह गया, चाहे एक नहीं दो, तो 4 और 5 तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, वरना अपलोड करने में दिक्कत हो, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियोज़ को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।